So, hi everyone, a very good evening to all of you, and welcome back once again to another class of PIB Current Affairs. In today's class, my dear friends, we are going to cover the PIB news from 10th and 11th of September 2025. I hope, my dear friends, the preparations for the upcoming RBI examinations are going well. Please do not lose this chance. There are good number of vacancies. So gear up yourself for the upcoming RBI Grade B 2025 examination. So please give me a thumbs up if you can see me properly and can hear me properly. Then I'll quickly start the class. Good evening, and good evening, everyone. Good evening, everyone. Please give me a thumbs up if everything is fine, if you can see me properly and can hear me properly. And I hope you guys have enjoyed the last revision class. Yes, सृष्टि मैंने ही रिप्लाई किया है. सृष्टि का डाउट था कि अगर वो ये पीआईबी के सेशन देख लेंगी तो क्या उनको पीआईबी सेशन रिवीजन देखने की ज़रूरत है या वो खुद से रिवाइज कर सकते हैं. तो आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं सृष्टि. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है. ओके. चलिए, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज फाइन, इफ यू कैन सी मी प्रॉपर्ली एंड कैन हियर मी प्रॉपर्ली गाइस, सो दैट आई कैन क्विकली स्टार्ट द क्लास. और जिन लोगों ने कल की रिवीजन क्लास नहीं देखी है, प्लीज़ जाइए देखिए, because these revision class, my dear friends, are really very important for you. It will add cherry on the cake of your preparation. All right, so let's start the class without any delay and let's talk about the very first question. Consider the following statements with respect to fast track immigration trusted traveler program, and you need to identify the correct statement. This scheme, my dear friends, was in the news in the month of January 2025. We covered this scheme in the month of January 2025, but right now it is again in the news. So a question from this particular scheme or program can be asked in the examination. So that is why we are going to cover this particular program, this particular scheme, this particular initiative in detail today. Now, why it is in news today? Okay, why it is in news today? Because the Ministry of Home Affairs has inaugurated the FTI Trusted Traveller Program at Lucknow, Tiruvananthapuram, Trichy, Kozhikode and Amritsar Airport. Thereby, the total number of airports having the FTI TTP program, having the FTI TTP program goes to 13. So now there are total 13 airports in the country which have FTI Trusted Travel Program installed. Okay, now what is this program? We'll talk about that. Don't worry. So this program, my dear friends, is for providing the world-class immigration facilities to the travelers, making international travel seamless and secure. Now देखो होता क्या है कि जब हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, when we go to a foreign country or when we arrive from a foreign country, we need to go for the immigration, right? And for that there is a huge queue. There are huge, there are long queues for immigration. Okay, so for reducing those for reducing that for reducing that time taken for immigration, the government has come up with FTI Trusted Traveler Program. Now how it is reducing the time, we'll talk about that as well, but अभी के लिए इतना समझिए that this program is for reducing the immigration चेक इन पॉइंट और चेकआउट पॉइंट. ठीक है, जो कि एयरपोर्ट पे हमें करना होता है व्हेन वी गो टू अ फॉरेन कंट्री और वी कम बैक फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री टू इंडिया. ठीक है, नाउ दिस फैसिलिटी माय डियर फ्रेंड्स इज राइट नाउ अवेलेबल फॉर द इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स एंड ओसीआई कार्ड होल्डर्स. ठीक है, इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स एंड ओसीआई पासपोर्ट होल्डर्स. ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. Okay, initially this program was started from the Delhi airport. Then in the month of January 2025, this program was launched at Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Cochin and Ahmedabad airport, and now 5 more airports have installed the FTI Trusted Traveller Program. ठीक है, have launched that FTI Trusted Traveller Program. ठीक है, it will be implemented at 21 major airports across the country. ठीक है, टोटल 21 मेजर एयरपोर्ट्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा. द नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन which works under the Ministry of Home Affairs. ठीक है, in the first phase, Indian citizens and OCI card holders will be covered, and we are in the first phase right now. After the successful implementation of the phase 1, the foreign travelers will also be included. ठीक है, after the successful implementation of the phase 1, the foreign travelers will also be included. Now coming to the process, how it works. Okay, now commit. Yes, I told the same destination. I think I told the same. No, it started from the Delhi airport only. Yes, यहाँ पे mention है.
इनिशियली द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, मुंबई से नहीं है, अच्छा मुंबई क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ ठीक बात है। ओके सो प्रोसेस इन्वॉल्व, प्रोसेस क्या क्या कैसे कैसे क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर। So to enroll in this program, my dear friends, the applicants need to complete first of all the online registration. आप गूगल पे सर्च करेंगे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, सबसे ऊपर ये वेबसाइट खुल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। So you will have to first do the online registration and submit the data, submit the document whichever are required. ठीक है, then the biometric data of the registered applicants will be captured either at the foreigners regional registration office or while passing through the airport. ठीक है, दोनों में से कहीं पे भी either your biometric data will be captured at the foreigners regional registration office or while or at the airport itself. ठीक है, the registered travelers will need to scan their airline issued boarding pass at the e-gate. तो ये FTT, ये जो FTI प्रोग्राम है, ठीक है, इसके लिए अलग से ई गेट्स बन गए एयरपोर्ट्स के ऊपर, राइट। तो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू जस्ट स्कैन योर बोर्डिंग पास एट द ई गेट, ठीक है, फॉलोइंग बाय स्कैनिंग योर पासपोर्ट एज वेल। उसके बाद आपको क्या करना होगा, पासपोर्ट स्कैन करना होगा, राइट। सो वंस यू स्कैन योर बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट, योर biometric, through your biometric your verification, your immigration has been done। तो इस तरीके से पूरा काम करता है। At both the arrival and departure point, the passengers biometrics will be authenticated at the e-gates, and once this authentication is successful, the e-gate will automatically open and immigration clearance will be deemed granted। ठीक है, I hope it is clear। Nabila is asking World Development Report. Yes, it is very important, and World Development Report I believe is yet not released। World Development Report 2025 की अभी रिलीज नहीं हुई है, and that is why I haven't covered it। ठीक है, मैं एक बार अभी देख लेता हूँ कि कहीं रिलीज ना हो गई हो। नहीं, अभी रिलीज नहीं हुई है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट नबीला। लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी रिगार्डिंग द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इट इज नॉट येट नॉट रिलीज्ड। ठीक है, डोंट वरी, वंस इट इज रिलीज आई विल डेफिनेटली बी कवरिंग इट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से तो 2023 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था 15 नंबर का, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। Okay, let's identify the correct statements now. The program is being implemented by Bureau of Immigration. Yes, it will be implemented in 21 airports across the country. Yes, and it started from not the Mumbai airport but the Delhi airport, Indira Gandhi International Airport से start हुआ था. So this is incorrect. So the right answer will be option B, only 1 and 2. Option B, only 1 and 2, my dear friends, will be the correct answer. I hope it is clear. Moving ahead to question number 2. Important question है, which of the following MOUs has not been signed between India and Mauritius during the visit of Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramgoolam? Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramgoolam was on an official visit to India, state visit to India, and during visit of the Prime Minister Dr. Naveen Chandra, a number of MOUs have been signed between the two countries. Okay, now which all MOUs have been signed? Number 1, on cooperation in the field of science and technology between CSIR, National Institute of Oceanography, and Mauritius Oceanography Institute, between Karmayogi Bharat and Ministry of Public Service and Administrative Reforms of Mauritius, under which the capacity building of the civil servants of the Mauritius will be done, on cooperation in the field of power sector, regarding Indian grant assistance for implementation of phase 2 of small development projects in Mauritius in the field of hydrography, on cooperation in the establishment of telemetry, tracking and telecommunication station. There is nothing to understand here. That's why I am just reading out the slide. You just listen it and you will be able to recall. An MOU has been signed between IIT Madras and University of Mauritius, and an MOU has been signed between Indian Institute of Plantation Management of Bangalore and the University of Mauritius. Okay, now there is no need to go into the details of these MOU, my dear friends, not at all required. And along with these MOUs, the government of India has committed a budgetary assistance of $25 million in the current financial year for the development of Mauritius. ठीक है जी, भारत सरकार ने $25 million का budgetary assistance अनाउंस किया है, कमिट किया है for Mauritius for in this current financial year. ठीक है, clear है? चलिए, let's come back to the question. On cooperation in the field of power sector, yes, there is an MOU on cooperation for the establishment of telemetry, tracking and telecommunication station between CSIR, NIO and Mauritius Oceanography Institute in the field of hydrography. Telemedicine में हमने कोई MOU साइन नहीं किया है, and that is why
The correct answer, my dear friends, will be option E. Option E will be the right answer. ठीक है, I hope it is clear. Moving ahead to question number 3. ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स headed by Jewel Oram has launched the Adi Sanskriti, which is a digital learning platform for tribal art forms, preserving heritage, enabling livelihoods and connecting India's tribal communities with the world. Which of the following are the three components of Adi Sanskriti? Okay, so the Ministry of Tribal Affairs, my dear friends, has right now launched the beta version of Adi Sanskriti. What is the beta version? So basically it has been launched for testing for a limited number of people. It has been launched. ठीक है, टेस्ट लॉन्च है. बीटा वर्जन का मतलब होता है टेस्ट लॉन्च. बिफोर द फुल फ्लेजेड लॉन्च, एवरी एप्लीकेशन, एवरी पोर्टल, एवरी इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड इन अ पायलट मोड. ठीक है, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बीटा वर्जन. ठीक है, तो आदि संस्कृति है क्या दोस्तों? इट इज अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट? फॉर द ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स, फॉर प्रिजर्विंग द हेरिटेज ऑफ ट्राइबल्स, फॉर इनेबलिंग द लाइवलीहुड्स फॉर द ट्राइबल्स and for connecting India's tribal communities with the world. So basically आदि संस्कृति से हम क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं, हम ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स के बारे में लोगों को जानकारी देंगे. विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स. Thereby we are going to preserve the heritage of tribals. With this we will enable the livelihoods for the tribals, and of course with this we are going to connect India's tribal heritage, India's tribal culture with the entire country, with the entire world in fact. Alright, and it is envisioned as the world's first digital university to preserve and promote the culture and traditional knowledge of the tribals. Okay, clear hai? Now there are three components of Adi Sanskriti, my dear friends. One is Adi Vishwavidyalaya, which is oh, I could see Nilesh Suryavanshi here. Hi Nilesh, how are you? I know Nilesh for the last 5 years. Glad to see you here, Nilesh. All right, Adi Vishwavidyalaya. Adi Vishwavidyalaya is the digital tribal art academy. What is it? It is currently offering 45 immersive courses on tribal dance, painting, crafts, music and folklore. Okay, Adi Vishwavidyalaya is currently offering 45 immersive courses on tribal dance, paintings, craft, music and folklore. Okay, Adi Sampada is a socio-cultural repository. ना रेपोजिटरी क्या होती है? जहां पे बहुत सारा डिटेल होता है किसी चीज का, कलेक्शन होती है किसी चीज की. तो आदि संपदा, माय डियर फ्रेंड्स, इज अ कलेक्शन ऑफ ओवर 5000 क्यूरेटेड डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस 5 थीम्स. ठीक है, इसमें 5000 क्यूरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं अक्रॉस 5 थीम्स विच आर पेंटिंग, डांस, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, आर्टिफैक्ट्स एंड लाइवलीहुड्स. एंड देन वी हैव आदि हाट, विच इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस विच इज करेंटली इंटीग्रेटेड विद ट्राइफेड, बट इट इज एनवाइसेज्ड दैट आदि हाट will be expanded and it will be converted into a dedicated online marketplace for tribal artisans, enabling sustainable livelihoods and direct consumer access. All right, and my dear friends, this platform is being built in close partnership with the state tribal research institutes. State tribal research institutes are onboarded for for partnership in building this particular platform that is called as Adi Sanskriti. ठीक है, क्लियर है? चलिए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. So which are the three components? Adi Vishwavidyalaya, Adi Sampada and Adi Haat. The right answer will be 1, 2 and 5. Option C will be the correct answer. Option C, my dear friends, will be the correct answer to this particular question. Question number 4 पे आते हैं. ये important question है. NCERT has celebrated 65th Foundation Day on 1st of September. During the event, PM E-Vidya mobile application has been launched. It will act as a centralized gateway for accessing all the key digital and broadcast initiatives under the PM E-Vidya program. It has been developed in collaboration with, that is the question. It has been developed in collaboration with. Okay? So NCERT has celebrated 65th Foundation on 1st of September and a number of initiatives have been launched. Out of all those initiatives, number 1 is PM E-Vidya mobile app. Now through this mobile app, the students will be able to access all the key digital and broadcast initiatives of the PM E-Vidya program. All right, जितने भी PM E-Vidya program के digital initiatives हैं, उसको PM E-Vidya app से access कर लिया जाएगा. Very simple, right? And it has been developed in collaboration with BISEG N, which is
भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट. पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल हैज बीन लॉन्च्ड फॉर बाल वाटिका. ठीक है, बाल वाटिका स्टेज के लिए, बाल वाटिका लेवल के लिए पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल, माय डियर फ्रेंड्स, हैज बीन लॉन्च्ड. Diksha second, the second edition of Diksha has been launched. Now, in the second edition of Diksha, my dear friends, there are structured lessons, there are adaptive assessments, there are performance feedback, there are discussion forums, and there are AI tools like read aloud, closed caption, and translation of text file into 12 languages. So basically, Diksha 2.0 is nothing but an advanced version of Diksha. Okay? The next initiative is very important, Prashast. The second edition of Prashast. What is Prashast? Pre-assessment holistic screening tool. What is it? It is a screening tool and pre-assessment का. ठीक है? It enhances mobile and web platforms for early identification of the children with disabilities. It is a screening tool. Just remember that and do remember the full form of Prashast. Pre-assessment holistic training tool. All right. Next initiative is Kitab Ek Padhe Anek. Now, this initiative is aligned with National Education Policy of 2020, and according to this policy, we need to create universal design of learning-based, accessible, digital and printed textbook for inclusive classroom. मतलब हम ऐसी किताबें बनाएंगे, right? We are going to create such textbooks, such digital and printed textbooks which are based on universal design of learning, which could be accessible by all. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है तो ही मस्ट बी एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर बुक. फॉर एग्जाम्पल किसी भी अगर अदर तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी है अगर चाइल्ड में, बच्चे में, तो ही और शी मस्ट बी एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उत्कल जननीन करा सुयोग्य संतना. ठीक है, pardon me for the pronunciation, Utkal Janani Kara Sujogya Santana, which is a book containing life and contribution of 100 great personalities of Odisha. 100 great personalities of Odisha. Okay? So coming back to the question, my dear friends, it is, the right answer is BICE again. Option B is the correct answer. Bhaskaracharya Institute of Space Application and Geoinformatics. ठीक है जी, क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, coming to the questions in short, my dear friends, the people who are attending my class for the first time, let me tell you, there are certain releases in PIB in which only 3-4 sentences are of importance. So I provide those 3-4 sentences in the form of questions. But while going through the questions in short, you just not have to remember the answer to the question. You need to also carefully read the question because a lot of information are provided in the questions as well. And every Tuesday, Thursday and Saturday, you can have the access to finance current affairs classes by Madhav sir, same channel 5 p.m. and for PDFs you can just scan this QR code, all right, to join the Telegram channel. Question number 5, Ministry of Earth Sciences headed by Dr. Jitendra Singh has participated at the 48th annual conference on oceans law and policy. This is the first time in the nearly 5-decade history of COLP that the conference is being hosted in the Indian subcontinent. पिछले 50 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रही है. So where is it being hosted? It is being hosted, my dear friends, in New Delhi, the capital of India. The right answer is option C. Question number 6, ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नेशनल टेस्ट हाउस, व्हाट इज इट? इट इज इंडियाज लार्जेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी. इट इज इंडियाज लार्जेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी, undertaking almost all types of testing, calibration and quality assessment related to industry, commerce, trade, etc. So basically जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो टेस्टिंग से गुजरता है. सो टेस्टिंग के लिए हमारे देश की जो सबसे बड़ी लैबोरेटरी है दैट इज नेशनल टेस्ट हाउस, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लैबोरेटरी है. Now it has completed 114 years of establishment. The question is under which ministry the national test house works. ठीक है, बिफोर दैट ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ 114 years of establishment a number of awards, initiatives, MOUs are there. ठीक है, ये मैंने मेजर उसमें नहीं लिखा है, ये आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इट इज ऑल्सो फाइन.
So during the occasion, NTH Annual Excellence Awards were presented to BIS Eastern Regional Office of Kolkata, to Kansai Nerolac Paints of Mumbai, to Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation, Public Health Engineering Department of Rajasthan, Uttar Pradesh Jal Jeevan Mission and NBCC India Limited of Guwahati. इनको NTH Annual Excellence Award दिया गया. इसके अलावा 3 टेस्टिंग फैसिलिटीज हैव बीन लॉन्च्ड, ठीक है, हैव बीन इनॉग्रेटेड. वन इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्टिंग फैसिलिटी एट नेशनल टेस्टिंग हाउस कोलकाता. अनदर इज ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी एज NTH गाजियाबाद, एंड वन मोर केमिकल टेस्टिंग लैबोरेटरी एट NTH गाजियाबाद. क्लियर है? इसके अलावा NTH ने कुछ MOU भी साइन करे हैं, ठीक है, वो भी आप देख लो, अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इट इज फाइन, राइट. So MOUs have been signed with CPET, which is Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology. Why this MOU has been signed? To strengthen capabilities in plastics and petrochemicals testing. Okay, with NISE, National Institute of Solar Energy, and National Institute of Wind Energy. Right? Why this MOU has been signed? To advance certification and testing of solar panels and wind turbines. Okay, with Power Finance Corporation to promote quality infrastructure financing and adoption of certified technologies in the power sector. And how can we adopt the certified technologies? Before certifying the technology must have gone through the testing, and for that this MOU has been signed. Okay, with Casagrande to ensure quality assurance in infrastructure and real estate, and with Jaipur University to deepen the academia industry collaboration. ठीक है, तो ये कुछ MOUs हैं और कुछ टेस्टिंग फैसिलिटीज और कुछ अवार्ड्स हैं. अगर आपको याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी माय डियर फ्रेंड्स इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर विच टू स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर विच टू स्टेट्स वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $212.64 million under the SHORE project. What is SHORE? Strengthening coastal resilience and the economy. All right, to support the coastal zone management. The two states, my dear friends, are Tamil Nadu and Karnataka. And the SHORE project's total outlay is $850 million. And the loan, my dear friends, this loan $212.64 million has been provided for a period of 23 years. ठीक है, 23 years के लिए लोन दिया गया है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 8. उन्मेषा, it is Asia's largest and most inclusive international literature festival. In the third edition of Unmesha, more than 550 eminent writers, poets, scholars, translators, publishers, and distinguished personalities from various walks of life will be participating. Question is, where will be the third edition taking place? The third edition of Unmesha will take place in Patna, the capital of Bihar. And the first edition took place in Shimla in 2022. The second one took place in 2023 in Bhopal. The second one in Bhopal, the first one in Shimla, 2022. In collaboration with which organization, Niti Aayog has organized the national workshop on the National Multidimensional Poverty Index, strengthening outreach and national capacity. जो नीति आयोग ने लास्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला था, वो पढ़ के जाना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RBI एग्जाम. ओके, नाउ दिस वर्कशॉप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद UNDP. UNDP is headquartered in New York, and its administrator is Ashim Steiner, and who is the president of Executive Council, Mohammed Abdul. ठीक है. What about UNEP, where it is headquartered? Nairobi in Kenya, and the executive director is Inger Anderson. इन सबके भाई जितने भी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके चीफ और इनके हेडक्वार्टर्स याद रखना इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे? कोलोनी स्विट्जरलैंड, एंड इट इज हेडेड बाय बोर्जे ब्रेंडे. ठीक है, बोर्जे ब्रेंडे ऐसे करके इनका नाम है. WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड, एंड हु इज द चीफ? एंगोजी आईवियाला. इनका नाम मेरे को कभी याद नहीं हो पाता. आई एम सॉरी. यूनेस्को ऑड्री अजोले डायरेक्टर जनरल, एंड यूनेस्को इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस. ठीक है, तो सबके जितने भी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके चीफ, उनके ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए. ठीक है,
एंड यस ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप, ये देखो ये मुझे लगता है कि कहीं गलती से पूछ ना ले एग्जामिनर, ड्यूरिंग द वर्कशॉप दीज स्टेट इनिशिएटिव्स वर डिस्कस, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम, उत्तर प्रदेश संभव अभियान, आंध्र प्रदेश जीरो पॉवर्टी P4 एंड उड़ीसा सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी प्लेटफॉर्म। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, विच स्टेट इज इंप्लीमेंटिंग जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ भी पूछ लेते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, तो प्लीज इन पे भरोसा करके ना चलें आप लोग। Next question is, with which international bank the government of India has signed $126.42 million loan agreement to promote rural development through sustainable and climate resilient tourism in the Tehri Lake region of Uttarakhand? This bank is Asian Development Bank, headquartered in Manila, Philippines, and it is headed by एम से नाम है यार, मैं नाम भूल गया। ठीक है, अभी फरवरी 2025 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, किसी को याद है तो बताओ भाई। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसातो टांगा, पता नहीं ऐसे कुछ तो भी नाम है। ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ, आप में से किसी को याद है तो बताइए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जिन लिकन इज द चीफ एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक का चेयर किसी को याद है बताओ। मसातू टंगा ऐसी कुछ तो भी है, एम से नाम है, आई एम श्योर। चलो एनीवेज, मेरे को याद आएगा तो मैं बता दूंगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर। यस, मसातो कांडा, थैंक्स श्रद्धा। मसातो कांडा इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डेडिकेटेड टू प्रिजर्विंग, डिजिटाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। ज्ञान भारतम, ऑप्शन बी। Where has, important question है, where has the first ever overseas campus of India's premier business school, that is IIM Ahmedabad, been inaugurated? IIM Ahmedabad's first overseas campus has been inaugurated in Dubai. The right answer, my dear friends, is option D. ठीक है, the last question for today, which bank has signed an MOU with Telecommunications Consultant India Limited to strengthen the bank's IT infrastructure and fast track its technology transformation journey, enabling faster, more reliable and customer centric digital services? The bank in question is, my dear friends, Punjab National Bank. It is headquartered in Delhi and Mr. Ashok Chandra is the MD and CEO. Mr. Ashok Chandra is the MD and CEO of Punjab National Bank. ठीक है, चलिए जी, so that's it for today's class, my dear friends. I hope all the questions and their explanations are clear. If you have any doubts, please ask me. Otherwise, give me a thumbs up. If you want to have the PDF of this class, just scan this QR code and join the Telegram channel and get the PDFs. Destination, I think it is not Punjab and Sindh, it is Punjab National Bank. Yes, Nilesh, please. I would love to hear from you. My Telegram ID is Mashi Manish, MASHY MANISH. Please DM me. Monthly compilation video, are you asking about video, Abhishek? If you are asking for video, so the June video is coming soon. उसके अलावा आगे और वीडियोस आती रहेंगी. And the people who I could see a number of people, you know, who join the session when I am about to end the class. ठीक है, ऐसा क्यों करते हो आप लोग? गवर्नमेंट स्कीम क्लास कब होगा भैया? रवि प्रकाश जी, आप सो रहे हैं क्या अभी तक? मेरी गवर्नमेंट स्कीम की क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलती है. सो गाइज, I am conducting the regular Monday Wednesday Friday government scheme class at 8 AM and I have provided a revision schedule as well where I will be taking 6 revision classes for government schemes. and जिन लोगों को भरोसा नहीं होता है वो नीलेश से पूछ सकते हैं. नीलेश मेरे यहाँ पे एडवोकेट की तरह काम करेंगे. पिछले 6 सालों से मैं लगातार सब कुछ करा रहा हूँ और एग्जाम में डायरेक्टली चीजें आ रही हैं. ठीक है जी, चलिए. Alright Sakshi, I will definitely have a look at your query. गवर्नमेंट स्कीम्स की रिवीजन क्लास, पीआईबी की रिवीजन क्लास, एनुअल सर्विस की रिवीजन क्लास, फाइनेंस करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास, जनरल करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास, ऑल ऑफ दीज आर विल बी टेकन अप. टाइम टेबल शेड्यूल मैंने ऑलरेडी दे दिया है. प्लीज गो एंड हैव दैट टाइम टेबल.
यस यस यू कैन डू दैट। हाँ, टेलीग्राम पे क्यों नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। अभी मैं अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मिलेगा, वो मैं डाल दूंगा। Definitely, Tanushri. Yes, my dear friends, one more thing. I am getting a lot of DM. I am daily devoting 1 hour for resolving the queries on Telegram. तो अभी तक कोई पेंडिंग नहीं है, पेंडिंग सिर्फ आज के हैं या मोस्ट प्रोबेबली कल रात के पेंडिंग होंगे। तो आज रात तक सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे टेलीग्राम पे। यू गाइज डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है जी, चलिए लेट्स वाइंड इट अप। Yes, Rinky, all those revision classes are much relevant for the NABARD exam as well, because if the NABARD notification will be released soon, then of course these sessions are equally important for the NABARD exam as well. Chaliye, let's wind it up. I'll see you in the next class on Monday. Keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care, and God bless.